हे फ्रेंड, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड कुछ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट विल लर्न अबाउट द थ्रेड कम्युनिकेशन एंड हाउ वी कैन अचीव इट बाय यूजिंग द methods from the object class like wait, notify and notify all, and how we can print the number in sequence while using the two thread. One will responsible for the even number, another responsible for the odd number. The next section will cover about the deadlock. What is the deadlock? Here you can read deadlock in Java is a programming situation where two or more threads are blocked forever. Java deadlock situation arises with at least two threads and two or more resources. And we'll create the situation first for deadlock और उसके बाद हम देखेंगे best solution how we can avoid the deadlock by using the sequencing locking mechanism. तो मैंने यहाँ पे IntelliJ IDE ओपन किया है। मैं यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करूँगा थ्रेड, and in this package I'll create one class print number, and in this class I'll create two method. One method will print the even number, another method will print the odd number. So I'll use public and I'll provide the locking mechanism. So I'll make this method as a synchronized void and even number. Okay, and here I'll create the while loop in the way of infinite, and one more variable I'll declare here int count and initialize it from the 0, not o0. Okay, so here I'll check the condition for even number. So count modular equals to 2 equals to 0, then number will be the even, and second count less than equals to given number. So for example right now I am adding the hard coded 100 और इसके बाद हम डायनेमिकली चेंज करके देखेंगे। और यहाँ पे हम system डॉट आउट डॉट println का यूज करेंगे टू प्रिंटिंग द नंबर। तो यहाँ पे हम काउंट प्रिंट करेंगे और आफ्टर दैट आफ्टर प्रिंटिंग दिस नंबर I'll move this thread inside the waiting state. So here I'll use the wait method, and I need to of course add the exception signature with method. Second method I'll create for odd number, so I'll copy it and paste, and I'll change the name of method. और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कंडीशंस लिखनी पड़ेगी odd के लिए, राइट? तो यहाँ पे count modular 2 equals to 1, that means this is the odd number. Okay, and after what I need to add one things also here. I need to increase the count, so I'll increase count here, and I'll use here notify method. So and notify will help or send the notification to threads those are already in the waiting state from the same object. Okay, and same thing I'll use here also, and notify I'll use the notify. Okay, so this is done. Now I'll create one more class to test, and from there I'll create the thread print numbers test. Okay, so here I'll create the two thread. So here I'll create the main method, and from main method I'll create the runnable even thread equals to okay, and I'll create the object of the thread print number. Okay, and I'll call the method of print numbers class. Which method I'll call? Print even number. Okay, because I created this as an even thread. Of course I need to handle it by the try catch. I handle it.
Okay, I'll mark it. This thread is created. Now second I thread create for the odd number, so I'll copy paste it and I'll rename the name odd, and here I'll call the method odd number. Okay, so I'll create two thread, and from one thread I'm calling the even number method of a print as we created as a synchronized method, and from odd we are calling the odd number as we created the method as a synchronized. Right here you can see this one we created recently, and now I need to start both the thread. Okay, so I'll start the both thread. So I'll create the thread equals to new thread, and I'll pass the even thread, and I create the second thread, sorry, thread 1 equals to new thread, and I'll pass the odd thread inside that odd thread, and I'll start the boot. So first I'll start the thread 1. Okay, we can start in any order, no problem. Thread 1 dot start, and now I'll test it. So here I'll run it. Here you can see we printed a number in the sequence by using the two thread. Let's make it dynamic. तो यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर राइट कर देता हूँ, like public print number, and it will be the integer type, right? Int number. Okay, and here I'll create the private int number. Okay, I'll initialize this from the constructor. This dot number equals to number. That's fine, and I can replace from the hard coded 100. Okay, now it will take dynamic input. And how we can add it? We can add it from here. So suppose I want to print 10. You can use here scanners or anything, right? Because now this class methods become a dynamic. Okay, so suppose I'm run with the 10. Stop and run, and here you can see threads are printed, right? So that was we communicated with two threads by using the, here you can see, synchronized block or method, and by using the synchronized method, and we use the wait and notify method for the from the object class. Let's move on the deadlock. So I created the deadlock already, right? Then we'll run it. Okay, so first I'll explain to you guys. यहाँ पे मैंने एक राइट थ्रेड 1 क्रिएट किया है। राइट थ्रेड 1 में मैंने क्या किया है, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, बुक और पेन। तो यहाँ पे हमारा यूज केस क्या होने वाला है कि अगर हम कुछ भी लिखना चाहते हैं, राइट, तो हमें बुक की भी ज़रूरत होगी जिसके ऊपर हम लिखेंगे, और लिखने के लिए हमें पेन की ज़रूरत होगी। जब हमारे पास बुक और पेन होगा तभी हम लिख पाएंगे। तो बुक और पेन यहाँ पे दो रिसोर्सेस हैं। और जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर आपको डेडलॉक क्रिएट करना है और डेडलॉक क्रिएट किस सिचुएशन में होता है, तो वहाँ पे टू रिसोर्सेस होना चाहिए, टू और मोर देन, और थ्रेड भी टू और मोर देन होना चाहिए। तो यहाँ पे दो रिसोर्सेस हैं, बुक और पेन, और यहाँ पे एक राइटर थ्रेड 1 और राइटर थ्रेड 2 मैंने क्रिएट किया है। ओके, तो ये दोनों मैंने ऑब्जेक्ट दोनों थ्रेड के साथ शेयर किए हैं बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। यू कैन सी हेयर राइटर थ्रेड 1, and we started the run method, and this thread will created by using the thread by extending the thread class. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने फर्स्ट लॉक प्रोवाइड किया है बुक पर, एंड आफ्टर दैट मैंने लॉक प्रोवाइड किया है पेन पर। दोनों पर हम एक साथ लॉक प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, बुक और पेन। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग प्रोवाइड की है बुक पर और पेन पर।
ठीक है, क्योंकि मेरे को दोनों ही चाहिए। आफ्टर दैट वी कैन राइट समथिंग। ओके, यहाँ पे थ्रेड टू में जाते हैं, जो मैंने राइट किया है थ्रेड टू। थ्रेड टू में मैंने सेम ही ऑब्जेक्ट शेयर किए हैं, बुक और पेन। और यहाँ पे मैंने लॉकिंग बुक पर प्रोवाइड किया है और यहाँ पे मैंने लॉकिंग पेन पे प्रोवाइड किया है। उसके बाद ही दोनों होंगे इसके पास, तभी ये जाके यहाँ पे कुछ लिख पाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं टेस्ट एग्जाम्पल में। तो टेस्ट एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, बुक और पेन, राइट। और इनको दोनों थ्रेड्स के साथ शेयर कर दिए बाई पासिंग एज एन आर्गुमेंट इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ thread writer1 and writer2, and I started both the thread. Okay, so now I'll run it the program. Here you can see both the threads are completed, right? Okay, now I'll create the deadlock. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बुक एज एन फर्स्ट लॉक प्रोवाइड किया है और सेकंड लॉक एज एन मैंने पेन ऑब्जेक्ट पे प्रोवाइड किया है। और आप थ्रेड टू में जाओगे ना, तो यहाँ पे भी मैंने बुक और पेन पे किया है। तो यहाँ पे क्या है ना, सिक्वेंसिंग हमने मैनेज किया है, तब जाके दोनों थ्रेड ने उसका यूज कर पाया। यहाँ पे अगर मैं उल्टा कर दूं, यहाँ पे पेन कर दूं और यहाँ पे मैं बुक कर दूं, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, एक डेडलॉक कंडीशन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास देखो, पहले वो लॉक प्रोवाइड करेगी बुक पर, और जैसे ये थ्रेड करेगी लॉक प्रोवाइड पेन पर, तो दोनों थ्रेड, एक ने बुक पर लॉक प्रोवाइड कर दिया, एक ने पेन पर लॉक प्रोवाइड कर दिया। अब वो आस्क कर रही है उससे कि तुम भाई ये पूछेगा कि भाई तुम बुक को रिलीज करो, और वो पूछेगा कि भाई तुम पेन को रिलीज करो। तो ह्यूमन तो है नहीं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके ले लेंगे। तो इस केसेस में यहाँ पे डेडलॉक सॉरी ऑकर होता है। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। I'll run it। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेडलॉक सिचुएशन में चला गया, कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है और एप्लीकेशन स्टिल रनिंग। तो बाय फॉलोइंग द लॉकिंग सीक्वेंस वी कैन अवॉइड द डेडलॉक। अब इस ओके, दिस वाज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेडलॉक। अभी ये लास्ट जो हमने प्रिंट सीक्वेंस नंबर का प्रोग्राम बनाया था, इसमें मैंने एक चीज को छोड़ दिया है, वो आप लोग करना, और यू कैन राइट इनसाइड द कमेंट सेक्शन। कि मैं इसको रन करता हूँ, राइट। मैंने इसको रन किया, it is printing the number in the sequence, or work is done with both thread, but still you can see it is in the running state because I used the infinite loop. So how can I terminate the loop? Just you need to write the logic for that and write inside the comment. Thank you for watching this video.